Law University, Delhi. And this is Hansika. This is me. And Arjun, and we are representing National University Delhi at the Pune Solar Debate Competition. We have heard a lot about CEERA-NLSIU Cafe, which is completely managed by acid attack survivors. And today we are here with you, the Chief Operating Officer of CHA Foundation, which is the parent body of CEERA-NLSIU Cafe. So we would like to know more about how this foundation came into being and how the idea of CEERA-NLSIU Foundation actually came to be. Okay, thank you, and thank you so much for considering us for your project. So I think when you see the background of CHA Foundation, all started from the advocacy. Initially, it was to stop acid attacks. There was a campaign, and campaign was just intending that to criminalize this act. So the thing was, when Nirbhaya Kand was there, Justice Sunwai committee especially formed to take the judicial review of the acts which was there to prevent a crime against women. So it was there, and obviously when something is very intentful, is going in the flow, it is very easy to pursue. Then this litigation was taken into consideration, and IPC 326A and B was added. So the work was started, and she was obviously, as you rightly said, how it was started. Because after getting justice, a lot of survivors across the nation was asking the same question: where to go now? The first question was to address. We should make something, some community-based something where we can live with the dignity and also with the livelihood. It was the first objective. So in this, I think more than a decade, we are working in the advocacy and rehabilitation of the survivor. It was very difficult initially to understand the challenge too. They are not able to they are not able to face it. They are not able to uncover the face it. They are not able to just go out by their own for any daily work, because they will be discriminated on the basis of their identity, which is new, which is the disfigured person. So when you are discriminating a person and he is already very hesitant with their looks, how it will be equitable or inclusive? So the first and foremost thing is to get the confidence again. And for the confidence, there are several steps. First, to help them to avail justice. So justice is the first thing which must be there, and which I think is the first right away. So justice, legally, जिसके नाम बात कर रहे हैं. Second is the compensation and other rights which are there available for the person or victim of others. First thing is the legal part. Second is the treatment. The third and fourth will be born how it will be. The whole medical facilities in India and abroad are not equipped to cater fourth and fifth one. So there we start the actual rehabilitation. We relocate them to the centers. Initially we take the cases and are legal associated with it. Parallelly, we provide them free medical support. The surgeries and the reconstructive ophthalmic surgeries. Best of the cases possible. So this goes hand in hand. Second stage is the skill development. Skill development or confidence building, where they can translate what they're feeling and how it can be managed by the other person who is there to face it. So under skill development, we have various programs to cater the wide age range, because acid victims are from very minor age group to the I think 45-50 years old age. So how to cater all this wide range of age groups in a single programming. So skill development, and parallelly we have the outward exposure program, where they always participate on talks, on platforms where they can raise their voice. It is very important also in this case. First, legal aid. Second, healthcare and medical solutions. Third is the skill development and personality development, where they have chance to expose. And we are getting reports from the mental team that she is doing good when she got the platform to speak up on the story and the case on dead actually. It was brilliant. So we know the best part of it, that she is good and she is very confident to manage their own new identity. In this case, in-house model is very much required. Why in-house? Because after getting required skill, confidence, you must learn the professionalism. Because throughout the channel, throughout the rehab process, you experience the very empathetic environment. Always, the other person is very empathetic. Always.
and you feel the community support and peer support, and you've never been to this professional center. So when your employer asking the time, look, this is not a good approach. Your salary will be deducted. The HR policies are, not allowing you to do so. So they are not ready. So this is very important. And obviously, eventually, when things will get added up, the employer will not satisfy and will just move on. Maybe you are not confident to take this job forward. So thing is, first you need to understand in-house what is the professional practice to sustain first. And second, when you earn something, then you have very first experience of expense of your own earned money. So why to work is very important because you never feel that. You never spend your own earned money. So CEERA gives initially these two purposes: to give this professional exposure, and second, to understand the expenditures, and obviously to experience the dignity, to experience the stakeholdership with the family. So under this CEERA's umbrella, we have CEERA's cafes, as you know, and now we have CEERA's store and CEERA's TV, the whole multimedia platform, YouTube channel for podcasts and interviews and talks. And fourth is coming CEERA's camps, just like Ola. So I think CEERA's umbrella is getting wider and wider, just because to get the best practice with the reintegration, not the forceful thing. Like if one is not comfortable with the cafe settings, why to push them in? If she's comfortable working remotely and stitching some bags and pads and everything, it is not different. CEERA's store is there for you. If you want to travel around the nation or maybe whatever you want, cabs and transportation work for you. If you're good at public speaking, maybe interviewing somebody, CEERA's team with a good choice. So I think with this larger umbrella, we can get around. Sir, when we talk about CEERA's umbrella schemes, so victims are working there. So what are the challenges that they faced initially, and how the public perceive them? Like victims are working there, the cafes. Yes. Initially, the first expression is very, I think, very mesmerizing. Maybe the right word. You don't know how to react when you enter just in the cafe. You don't know. See, if a visit is a purposeful visit, if you know that she was hangout model, you are mentally prepared, and you are just going in that. That let's meet with the survivors, let's chat with them, let's order some food, and the walk-in. And if the walk-in is just a regular customer, it is very difficult to understand. If you're anybody, you are just entering and you are just so many girls are there with so much history, and you are fine with the community. See, all of them are the faces majorly is. So first question is how to get the information what is wrong with them. समझ रहे? Yes. The first question, and it is very sensitive at the same time. So if you don't have this courage to just go and ask the manager or maybe the right person or to the survivor what happened, it is very difficult to sit and take a sip of your coffee. So we ease the environment. What we do when we experience this kind of a visit, the survivors are working there who are good at speaking, and they have this courage to face, and maybe we can say they are just properly rehabilitated. Each single trauma has been addressed. So what is this? Then they just go out there. They just go. If you're a customer, they'll ask you, how may I help you? How can you just ease with you? Will lot of comfort to start the conversation, and it goes very naturally. So when you share that my husband or maybe my friend or any who whatever the story, they are telling you with the confidence without a single drop of truth. They are not looking for sympathy there. Yes. Just accepting. Then you just look at her face and some confidence. How she's telling the story so correct. It is not possible. This is not natural. The next question in your mind, but this is natural anyways because it is not the first time she's sharing. A lot, maybe more than 5 years, and now she's confident. Why? Because she lived with dignity. Now she is very much humble and I think gracious for the life. Whatever was happened was good for me. Many times they say that. Sir, you mentioned the rehabilitation process and how afterwards they enter the actual job market and how that is different from the empathetic environment. So do the survivors leave the CEERA's umbrella and go seek jobs elsewhere as well, or do they stick to just the CEERA's?
Yes, it is difficult because, as I already mentioned, this model is not very old. Actually, we started in 40, and we are experimenting a lot, and now we are confident with the model. Like, I think 3 years was there in the COVID situation, and hospitality industry was very challenging for us as she was finishing model. It is almost 6 to 7 years. We can say that we work in a proper profitable business system. So now we understand that at least 3 to 5 years is the maximum time frame where these survivors can be, equipped with the confidence to go out there and take sustainable job. So sustainable job must require, 2 to 5 year transition period. So I also wanted to ask about what exactly is the employment structure over here. Is it that they are doing just a voluntary programs? Is there a standard labor contract between the survivors and the firm? What exactly is the structure for employment over here? Yes, I think this is a good question. When it comes to the proper onboarding as an employee, right? There are several benefits, HR benefits and other things. So yes, we take on board these survivors as a proper employee, where they get the, see, we have segregated these two things. One is the welfare part of it, which is not intermingled with the employment opportunities, with the things which we are doing, which are offering them in HR policy. What are the things? The important healthcare जो चाहिए support, the surgeries, right? So here it is very important to note that if the burn percentage is more than 80%, right, then it will take more than 15 surgeries, minimum 15 surgeries. 15 to 20 is the range. So, and 2 consecutive surgeries can be performed minimum interval of 6 months. So you can assume that 2 surgeries can be performed throughout the year. So 15 to 20 surgeries would take 8 years to 10 years. So it is very difficult. I'm just giving you a basic survival example. It is not like that they are confident and fit enough to perform, but to sustain. So if you count other part of it, like this laser surgeries and multiple surgeries also continuing, I'm excluding those things. But still, 8 to 10 years, 15 to 20 surgeries. And you think one surgery would take approximately in private hospitals 2 lakh rupees minimum. And in government hospital, taking consumable charge, surgery will be free of cost obviously, but the consumable invoices will also be associated. Then it would be around 70,000 to 80,000 per surgery. So it is very difficult. It must be provided separately when they are employed on a state umbrella. Other things, if they have a family and their children in the school, we pay the school fees. So, and the maternity benefits. Like 50,000 rupees if you are expecting pregnancy and after. And also, one extra, then this is the welfare schemes. These are the welfare schemes. And other HR policies are very flexible. When you requiring the surgery now, not even you are taking benefit, the welfare benefit on the other side, but also 1 month paid leave will be there. And so many HR, flexible things are. So this is the thing which any other employer can perform. But when you include those expense, of these two things, it will go beyond. More than if a same organization taking care of all expenses, it would go beyond 5 to 6 lakh rupees per year, which is around 50,000 per month, CTC. But it can be like that. So this is something. So what we ensure is this comes under the rehabilitation model, not a proper company structure model. This is just a platform to provide them a transition phase, as I already mentioned. And after getting proper, 2 years, 5 years maximum. After 5 years, it is very much, written defined that you will be going out to take the other opportunities. And if you are, if you deserve a good administrative position, you can come work anywhere. See, we have a good network in northern part of India, like UP, Odisha, West Bengal, and the expect. So how? So in this settlement, we require administrative staff, and in this case, we expect the survivors who are confident enough to come and join in this way. And sir, with regards to all the funding that you mentioned, that this is the amount of money which is required,
What exactly is the funding model for Shah Foundation and Shiro's umbrella? See, very good. Funding model initially when we started the Shiro's hangout model in 14, it was Shah Foundation, just after पहले starting बोला was the parent organization, but it was Section 8 company under the Companies Law 2013. So we established the Shah Foundation Trust again in 2019 to separate these two entities. One is very much responsible to perform business activities without taking burden of welfare activities. So it is not meant to receive fund and charity through the company account, through the Shah Foundation 6 company. So it is now split. So for each and every project which I discussed are funded by the Indian companies under the CSR mandate. And apart from the exemption of special positions, does the government provide any support to the Shiro's Foundation? Not yet actually, but for Lucknow chapter, if you see, they collaborated with us for the space and the initial 3 months business support. It was there in Lucknow. So it was truly insightful to have this session with you. We understood the whole environment that's built here in Shah Foundation, and we're really thankful for you to be present here and answering our questions like this. Thank you so much. We're grateful for having you. Thank you. We have Akash sir with us, who is the Chief Legal Officer of the Shah Foundation. So we have heard a lot about Shah Foundation, how it manages cases of the president themselves. We want to know that apart from how many cases have Shah managed, and what are the legal basic legal that you suggest to be to us in Excel. Thank you for inviting us and for taking the podcast. See, Shah is working since 2013 for this cause, and we are the sole pioneer of this kind of cause. आप अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इनका नहीं करना क्वेश्चन में पास डायरेक्टली सी जब ये ऑफेंस होता है ना एसिड अटैक का, तो आप सोचो कि 2012 या 2013 से पहले कभी एसिड अटैक हुआ हो किसी का दिला लिखा गया तो वो FIR करा ही नहीं पाता था। वो जाता था पुलिस के पास, बोलते थे साहब मेरे पास दिला लिख दिया गया, तो उसको हम लोग ग्रीवियस हर्ट में चार्ज करते हैं या हम उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में चार्ज करते हैं। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में तो भी सजा हमारे पास ठीक ठाक है, ठीक है, या उसका जो भी क्या है तो अटेम्प्ट में आप जानते हो 511 लगता है, तो जो भी उसका पनिशमेंट होता है उस पर हाफ करके वो देता है। बट सोचो अगर उसको 323 लग रही है तो कितना कम सजा हुआ और इतनी ग्रीवियस ऑफेंस की, तो कोई डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं था। फिर 2012 में जब ये निर्भया कांड हुआ, उस पर जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, तब 326 से 326 बी इनकलकेट हुआ हमारे एग्रेशन में, जो कि आज BNS के अकॉर्डिंग 124 है। और फिर ये जो इसमें सजा है 10 साल तक की सजा है, पेनल्टी है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा हमारे लिए जो लीगल चेंज और लीगल रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं लॉ स्टूडेंट है ना, जो हम सोचते हैं, जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, 2013 का अमेंडमेंट से आया हुआ, तो ये बहुत एक माइलस्टोन है कि इन जैसे विक्टिमों को हम इस कॉर्नर पे लेके आए या चीज़ें की है कि ये अपनी कम से कम अपना ऑफेंस जो हुआ है उसको रजिस्टर तो करा पाए, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, आपने कहा कि छाव कितने लोगों को अब तक वो कर पाए और क्या चाहते हैं कि कैसे लीगल एड दिया जाए। देखिए, छाव ने अब तक काफ़ी केसेस को रीच आउट किया है। डेटाबेस में अगर हमारे पास देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 250-300 सर्वाइवर है, ठीक है। सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं होता है हमारा कि हम लीगल काम करें, थ्रू गेटिंग सर्वाइवर टू देयर, मतलब कि उसको खड़ा होने तक का हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं। उसके बीच में कुछ सेगमेंट आता है, उसमें सबसे पहले उसको रीच आउट करने का सेगमेंट आता है, उसको पहुंचे, कोई केस हुआ, हमने न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू, मीडिया के थ्रू या कैसे भी हम उसको पहुंचने के बाद हम उनको मेडिकल एड देते हैं सबसे पहले। उसी के साथ ही ये लीगल एड जो है वो कंपेयर होता है या ओवरलैप होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि ये जो ऑफेंस आपके साथ हुआ है क्या इसकी FIR हो चुकी है, ठीक है। FIR कराना और ना कराना भी चैलेंज है। क्या होता है कि वो इतने डरे होते हैं, वो ट्रॉमाटाइज होते हैं, वो FIR नहीं करा पाते, नहीं करा पाते, पुलिस आ जाती है, अगर उनसे पूछती है, सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, तो कई बार वो मामला रफा दफा करने की होती है, अरे ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा सही से। तो उस समय उनको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये FIR तो करानी ही करानी, तो ये पता होगा तो बताओ कि हाँ, जैसे कई बार एक केस अभी हुआ था हाल फिलहाल में, तो एक बच्ची को 16 साल की उसको रेप किया, उसके साथ उसको बैटरी का पानी कर दिया, तो उनके में जो FIR हुई उसमें 326 से मेंशन नहीं था। तो अब सोचो कि वो क्या हो गया, फिर वो उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा अगर 326 से मेंशन नहीं है, उनको एसिड अटैक विक्टिम नहीं माना जाएगा, तो FIR को भी चेंज कराना पड़ता है। तो अगर वो तो फैमिली को नहीं पता है, वो नहीं पता कि कौन सी धारा लग रही है, तो एटलीस्ट अगर ये हमने अवेयर किया तो क्या पता किसी ना इंसान को पता हो उसकी FIR देखे तो ये प्रॉब्लम ना है। और तो FIR को भी चेंज करा सकते हैं, बट फिर भी वो टेक्निकलिटीज को लेके आना, अवेयरनेस ही सबसे बड़ा चीज़ है। तो हम लोग उनको ये FIR का काम पहले शुरू कराते हैं, हमारे उसमें आता है जो लीगल है। उसके बाद जैसे ही FIR लॉन्च हो गई, उनके केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले जो आईजी होते हैं, हम उनसे लाइसेंस करते हैं, क्या हो रहा है, कोई एविडेंस तो नहीं छूट गया, जो वेंडर है जो एसिड सप्लाई किया जिसमें वो पकड़ा गया कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ा जाएगा तो कोर्ट में स्टार विटनेस का ही काम होता है, वो अपनी टेस्टिमनी देगा तो सीधा कन्विक्शन हो सकता है ना कि हाँ मैंने इसको भेजा, वो एस्टैब्लिश हो गई,
ड्रिल किलिंग की स्टैब्लिश हो गई, वेपन डिराइव हो गया, तो सीधा सीधा कोर्ट के पास आ जाता है। कई बार मामलों में छूट जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोर्ट सीधा एविडेंस पे रिलाई करता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। तो अगर हम अवेयरनेस कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं। तो पुलिस का रूल हमें देखना होता है, उसके मैंडेट को देखना सही से कर रही है, नहीं कर रही है। उसके अलावा फिर क्या होता है, पुलिस के पास एक और मैंडेट होता है जो कि लाइजनिंग होता है डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी के साथ। डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी सुमो मोटो या फिर जो SHO है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये लोग सॉफ्ट कॉपी मेल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी को कि एक मामला एसिड अटैक का आया है, ताकि उनको कॉम्पनसेशन रिलीज होगा। हर स्टेट का अपना एक निजी कॉम्पनसेशन स्कीम चलती है। अगर आप जनरल बात करो तो 357 CRPC देख सकते हो, उसमें विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बनाई की गई है, बट वो डिपेंड किया है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, वो लोग बैठ के डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी के साथ फ्रेम करेंगे। तो हमारी यूपी का अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई स्कीम चलती है, जिसके तहत ये एसिड अटैक विक्टिम्स कवर होते हैं। उसमें मैंडेट ये है कि पहले बता दो, अभी चेंज हो गया, पहले ये है कि इनको 3 लाख तक का मुआवजा मिलता है। 1 लाख जैसे इंटीमेशन कर दिया SHO SP ने कि भाई हमारे पास ये केस संज्ञान में आया है, ये FIR है, ये सारी चीजें भेज दी है, वो 15 दिन में 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में रिलीज करेंगे, मैंडेट है। और बाकी के 2 लाख विदिन 2 मंथ्स इनको करना ही करना। और इसके साथ साथ हमारे पास 357 CA अगर कहोगे तो इनका इलाज मुफ्त किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट से किसी तरह का ग्रांट पाते हैं वो मना नहीं कर सकते उसका इलाज कराने से। इसके बाद वो कॉम्पनसेशन फाइल हो गया, उसके बाद आता है कि कोर्ट। अब वो कई बार ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी को नोटिफिकेशन पहुंच गया, इनको या मिल गया उनको, उसके बाद वो पैनल लॉयर इनको देते हैं। पैनल लॉयर देखिए गवर्नमेंट लॉयर ऑलरेडी वो ओवर बर्डन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपना काम अच्छे नहीं करते, बट मुझे लगता है कि कोर्ट का काम इतना ज़्यादा उनके पास ओवर बर्डन है कि वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो उसके अंदर वो केस की जो भी ट्रायल या कुछ भी होती है, मे भी छूट जाते हैं, है ना, बेल मिल जाती है। तो इन लगना है जो हमें एक सिस्टम डेवलप करना है। So, sir, what would you think are the differences that are there between the provisions that were there previous offences and the provisions that are there now that are related to acid attacks? If you ask me that what was the earlier provision and now provision, let me read this answer to you. Earlier there was no such provision. Since 2013 we have this kind of provision, and till now there is no change at all. It is always in an improvisation mode. For example, if I'll illustrate to you, 2015 again Supreme Court reinstated its order that the guidelines which is given in Lakshmi Union of India must be implemented by the state, and all the state the Secretary General formulated the guidelines which is issued by the Ministry of Home Affairs, and they have mandated given acid state regulation. They have mandated to regulate Poison Act 1990, and so many regulations have been there in that notification. So this is improvisation towards implementation of better laws which was passed earlier in 2013. So before 2013 there is only a little mechanism to curb these kind of cases. But since we are in a 2025, you have come to know, and you will shocking that which is more fact that NCRB released its data, and according to NCRB, almost in a year, approx 210 cases of acid attack has been reported. I am talking about reported cases. What about unreported? In India, we know how people are doing, how much they are able to know the legal things. Do you think this number is totally justified? It's really a serious question. कि if अगर ये अलार्मिंग है तो क्या यही कल हो रहा है? टॉप 5 स्टेट हमारे पास है, जिसमें हम अगर यूपी की बात करें सेकंड में, वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे, बिहार थर्ड पे। अभी भी हम लोग RTI फाइल करते हैं, उनके जवाब तो हमारे पास आते हैं, सीधा डिनार हो जाता है कि ये जो सूचना आपने हमें मांगी है ये हमारे से संबंधित नहीं है। तो पहले हमारे पास सिर्फ एक छोटी चीजें थी जिसे हम डील करते थे, बट अब हमने जो उसको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और ऐसे ज्यादा नहीं हो रहे हैं जो होना चाहिए आज की सोसाइटी के हिसाब से, बट हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम पे भरोसा ही रखना हमारा काम है। बट हमें इसमें जरूरत है और एडवोकेसी और भी तरीके की। तो पहले सिर्फ माने तो आपके पास 323, 507, उसके साथ आप इंटिमिडेशन भी ऐड कर देते हैं, कभी FIR। वो पुलिस की विवेक पे होता है कि जैसे स्टेटमेंट दिया है कंप्लेनेंट ने, उस पर क्या क्या धाराएं लगती है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जाते हैं, वो नहीं मैच कर पाता है इंग्रीडिएंट, तो फट भी जाता है ना। बट फिर भी मोस्टली पहले केसेस में 323, 507 तो आ ही करता था, सॉरी 307 अटेम्प्ट का। बट अब हमारे पास सीधा 326A लगता है। 326A लगता है तो उससे ये हो जाता है कि ये क्या कहते हैं कॉग्निजेबल और नॉन विलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो इसमें पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट एन ऑर्डर मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसमें बेल मिलना मुश्किल हो जाती है। जरूरी नहीं है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल नहीं मिलती, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने बोला था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल नहीं मिलती है।
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डेट एज अ मैटर ऑफ राइट है, ठीक है। पेलेबल ऑफेंस है एज अ मैटर ऑफ राइट है, यू गॉट फाइन, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, इट इज अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट वेदर दे विल बी ग्रांटेड टू योर गिवन नॉट अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टेंसेस एंड एज पर द केस। तो ये इसलिए मिल जाती है। तो कभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल मिल जाती है। तो कई बार हमने सिचुएशन देखा है कि जैसे कि एक केस है, उसमें एक एजेड आदमी है, किसी के ऊपर अटेम्प्ट किया है, थ्रेट किया है, फेक भी दिया है, बट वो अब ऐसे अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर इतना ज़्यादा है, उसको जेल में नहीं रखा जाता या उसको कस्टडी अंडर ट्रायल में नहीं रखा जाता, तो अल्टीमेटली बेल देनी पड़ जाती है। तो क्योंकि हमें सोसाइटल इंटरेस्ट और क्रिमिनल इंटरेस्ट दोनों देखना है, हमारी ये जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, ये एक रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पे वर्क करती है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी वर्क करती है, रिट्रीब्यूटिव पे नहीं करती। बदले की भावना नहीं है कि हमको क्रिमिनल को कुछ सबक सिखाना है, हमको क्रिमिनल को बदलना है, इसीलिए हमारे यहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी है। तो ये चीज़ें भी हैं। So when you meet the victims in daily life and when you see them suffering from the legal community, then what are the legal reforms that you would like to suggest, like in the asset attack sale or compensation or any other things? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं बोलूँगा कि सबसे जरूरी जो चीज़ है ना, वो है एसेट सेल रेगुलेशन। एसेट बैन नहीं, और वो बैन हो नहीं सकता, एनीथिंग इन लॉ बैन इज अ बैड थिंग। आप कुछ भी बैन करो ना तो बुरा है, क्योंकि हमें कुछ साइंटिफिक चीज़ों के लिए, रिसर्च के लिए हमें एसेट जरूरत है, बट इसका रेगुलेशन के लिए मैंडेट आया हुआ है, बट वो फॉलो नहीं है। रेगुलेशन के मैंडेट क्या है कि जो भी वेंडर्स होंगे वो लाइसेंस वेंडर होंगे, कोई भी एसेट नहीं बेचने लग जाएगा। जब कोई एसेट खरीदने जाएगा तो वो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, अपना आधार कार्ड उसे शो करना चाहिए, वो उसको रजिस्टर्ड लिखेगा कि ये आदमी लेके जा रहा है, इस पर्पज के लिए जा रहा है, मेरे पास इतना स्टॉक है, इससे इतना कम हो गया। ये सारी चीज़ कहाँ फॉलो होती है? आप भी जाना, अभी कभी ना कभी किसी और करोगे कि आपने कभी एसेट प्रोक्योर किया होगा। ये सुनो, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, अभी हम लोग पुणे में रहे थे, हमने वहाँ सर्वे किया, तो जो हमारे पास सर्वाइवर है, मैंने खुद ही उनको बोला कि जाओ आपको एसेट लेके, और दुकानदार ने वहाँ पे उनका चेहरा देखते हुए भी उसने पूछा कि किस काम के एसेट लेके जा रहे हैं। सिर्फ 60 रुपए का एसेट मिल रहा है दुकान में, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, SDM का काम है उनके तरफ पे कि ये चीज़ को सुनिश्चित करें कि एसेट सिर्फ लाइसेंस वेंडर ही भेजे और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करें, क्योंकि अभी भी जिले कस्बे में अगर कोई अटैक हो रहा है तो सबसे आसानी से उन्हें तैयार मिल जा रहा है। तो अगर वही हम लोग इस पर काम करेंगे तो कितना हो सकता है कि हम इन नंबरों में रियायत ला सकें। तो ये तो सबसे बड़ा चेंज करना ही करना है। उसके बाद मैं कहूँ तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि पुलिस को हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन को और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी से और थोड़ा इफेक्टिव मोड में चेंज कर पाएँ, सर्वाइवरों में थोड़े उनके लिए कुछ ईज बना सकें, है ना, कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना सकें, है ना, एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकें। जैसे मैं देखता हूँ कि अभी वो आ भी जाते हैं और पुलिस उन पास जाती है तो वो सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं। हम चाहते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी से भी बात किया है कि क्यों नहीं हम लोग को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना है, जबकि आपके मैंडेट में लिखा है कि कोई एक्सपर्ट को आप रख सकते हैं। ग्राउंड 2013 से इसी पे काम कर रहे हैं और हम लोग ही ये पॉइंट है, तो हम एक्सपर्ट ही हुए ना। तो अगर आप हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना दो और अपने जिलों के सारे पुलिस स्टेशन में ये चीज़ कर दो कि कभी कोई ऐसा मामला आए संज्ञान में, तो आप इनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव का पता सीधा वहीं एक्वायर कर लेंगे, तो उनको जो डैमेज हो रहा है चेहरे का, जो स्कार लंबे टाइम तक लगा, तो कम से कम बच तो सकता है, उसको लिया जा सकती है। और मुझे लगता है कॉम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करने की थोड़ी ज़रूरत है। हर स्टेट, कुछ स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट को और करने की ज़रूरत है। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ पेंशन स्कीमों को भी थोड़ा सा उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो महंगाई है और जो पहले से बढ़ा है तो उसमें भी करने की ज़रूरत है। देखिए, जो अब की जो जनरेशन है वही तो मुझे लगता है कि आगे उसको चलाएगी, कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो मुझे लगता है कि एज अ लॉ स्टूडेंट अपने आसपास बहुत अवेयर रहना चाहिए। आपको एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। एम्पैथेटिक होने की जरूरत है कि आपको पता है कि आपकी प्रोफेशनल डिग्री आप उसको किस वे में कैसे मदद कर सकते हो।